पिछले वीडियो में हमारे किचन क्लीनिंग इश्यूज तो सॉर्ट हो गए थे। इन दिस वीडियो आई विल टेक ऑन द नेक्स्ट बिग स्पेस जिसे क्लीन करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं करता, हमारा बाथरूम। हेलो एंड वेलकम टू द बिग बास्केट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बाथरूम क्लीनिंग के कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपकी बाथरूम मेंटेनेंस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट टुडेज गिव अवे चैलेंज टू विन एन एक्साइटिंग वाउचर फ्रॉम बिग बास्केट। तो आइए शुरू करते हैं क्लीनिंग। The first rule of effective cleaning is to start with an empty space. इसलिए मैं बाथरूम में रखी सभी चीजों को हटा दूंगी। एक एक सामान उठाकर जगह साफ करने में टाइम भी ज्यादा लगता है और एफर्ट भी। So make sure you have an empty canvas before starting. Next, gather all your cleaning supplies and tools. Cleaners, dusters, disinfectants and brushes play an important role in making your cleaning effective. जब क्लीनिंग सप्लाईज बेहतर होंगे तो क्लीनिंग रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे और फ्यूचर में क्लीनिंग करने का मोटिवेशन भी बना रहेगा। तो मैंने अब अपने क्लीनिंग ग्लव्स पहन लिए हैं टू गेट इनटू द ग्राइंड। क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ योर बाथरूम इन्वॉल्व्स टू बेसिक स्टेप्स, रूटीन एंड सेक्शनिंग। जब हमें आगे से आगे अपना रूटीन और क्लीनिंग सेक्शंस पता रहते हैं तो सफाई करने में आसानी रहती है। You will know what needs to be cleaned next and the momentum of cleaning will keep going. वॉश बेसिन एरिया को आप सिंपल सोप सोल्यूशन से एक स्क्रब की मदद से क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ बेसिन ही नहीं, बेसिन के चारों तरफ के एरिया को भी अच्छे से स्क्रब करके क्लीन कर लीजिए जिससे भी किसी भी तरह की फंगस या कालापन जमा ना हो। After a thorough scrub, rinse everything with water and wipe it down with a semi-dry microfiber cloth. This ensures quick drying of the surface and prevents water stains around the basin, leaving it sparkling clean. अक्सर बाथरूम सर्फेसेस पे लाइम स्केल सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं और व्हाइट मार्क्स छोड़ जाते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही आसान DIY सॉल्यूशन है। बस एक बोल में बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करके एक थिन सा पेस्ट बना लीजिए। अब जहाँ भी वाटर स्टेन्स दिख रहे हैं वहाँ इस पेस्ट को लगा दीजिए। Vinegar helps cut through lime scale marks, while baking soda adds a fantastic shine to surfaces, especially steel. You can apply this paste and leave it on for 5 to 10 minutes, then clean it off with a microfiber cloth. Results आपके सामने ही है ना कमाल की टिप? Moving on to the next segment of the bathroom, the walls. Aim to scrub and clean the bathroom walls and floors once a week. With frequent use, grime, gunk and germs accumulate on these surfaces and if not cleaned regularly, they can leave a foul smell in the bathroom. Weekly scrubbing ensures that the surfaces remain clean and free from germs. Scrub clean के बाद walls को दीजिए एक quick spray wash and don't forget to dry them later. I use a soft microfiber cloth to remove excess moisture and a soft towel to dry them completely. This helps the bathroom dry quickly and prevents any lingering smell or marks. The easiest and old school method of cleaning mirrors is to use an old newspaper. अक्सर कपड़े से या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मिरर में क्लीनिंग के बाद भी स्ट्रीक्स या लाइंस रह जाती हैं, बट एक न्यूज़पेपर इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देगा। Simply roll up a newspaper, spray disinfectant or plain water on the mirror and start rubbing it. In no time, your mirror will be shining bright. Once the cleaning is done, wipe the floor with a wiper and let it air dry completely. The next step in bathroom maintenance is organizing. Bathroom में हम बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं and with time, the space can become cluttered with toiletries and other essentials. Here is a simple trick to keep everything organized. Use baskets like these. Baskets help keep everything collected and provide a neat appearance to your storage. इन बास्केट्स में हैंडल होने से आप इसे आराम से अंदर बाहर निकाल सकते हैं या पीछे रखी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक बास्केट में टॉयलेटरीज इकट्ठी कर ली है और दूसरी बास्केट में मैं सारे क्लीनिंग सप्लाईज रख लूंगी। टू कीप द बाथरूम क्लीन, always have a dustbin in place. Fallen hair or bathroom waste scattered on the floor can create a very untidy look, so a small dustbin can help solve this issue. I'll keep it in the cabinet to minimize the visual clutter.
विजुअल क्लटर की बात करें तो अलग अलग कलर की बॉटल्स या टॉयलेटरीज बाथरूम के एस्थेटिक्स को खराब करती हैं। जस्ट लाइक इन होटल्स, you can also use dispensers like these for your body washes and shampoos to make the bathroom look beautiful and clutter-free. Another important element of maintaining a pleasant bathroom environment is fragrance. For that, you can use automatic air fresheners or sprays that help maintain freshness and remove any unpleasant odor. ये डिफ्यूजर रेगुलरली एक प्लेजेंट सेंट स्प्रे करता है जिससे कि बाथरूम का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही इनवाइटिंग हो जाता है। नेक्स्ट, आई विल फोकस ऑन एनहांसिंग द लुक्स ऑफ द बाथरूम। नथिंग एड्स इंस्टेंट लाइफ टू अ डल कॉर्नर क्वाइट लाइक अ प्लांट। मेंटेनिंग हाइजीन इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बाथरूम केयर। हमेशा ध्यान रखें कि हैंड टॉवल्स को रेगुलरली चेंज करें और उन्हें बेसिन एरिया के पास ही कहीं हैंग करें। To cater to extra conscious guests, you can keep toilet seat covers handy, ensuring your bathroom meets the highest hygiene standards. Last but not least, get creative with making your utility area both functional and aesthetically pleasing. मेरे बाथरूम में एक वॉशिंग मशीन है जो कि प्रैक्टिकल तो है बट अपीलिंग बिल्कुल नहीं है। So, why not utilize this space for better? I plan to place my washing essentials on top of the machine, which not only makes them more accessible but also adds a touch of order and style. साथ ही में जो एक्स्ट्रा स्पेस है वहां पर मैं एक बास्केट प्लेस करूंगी जिसमें मैं कुछ हैंड टॉवल्स या बाथरूम एसेंशियल्स रख लूंगी। Instead of cluttering the space with random artifacts that may seem out of place, I have chosen elements that complement the bathroom's needs and enhance its functionality. And lastly, as I said, मैं कुछ प्लांट्स ऐड करूंगी to bring the touch of nature indoors. Now, as promised, here is the giveaway question for you. What solution did I use to clean the bathroom taps? Write your answers in the comment section below. और साथ में मुझे ये जरूर बताइए कि आपको अपने घर में कौन सा एरिया क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। So like this video, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to the Big Basket YouTube channel. And I'll see you in the next one very soon. Bye.